पिले तुम मानक सठिक भाव आसुथिबो एवं समस्त पिले वेरी गुड मॉर्निंग एवं लाइव सेशन मध्यम पिले स्वागत। तो एथिरे पिले आमे कवर अप करबा इंडियन पॉलिटी रो 1500 MCQ रो सीरीज जोटा कि एटा पिले पार्ट 2 पूर्व पिले यार गोटे पार्ट कवर अप होइतिला। तो से गोटे पार्ट रे पिले आमे शिखिथिले 300 क्वेश्चन। तो एथिरे पिले पाखापाखि मु टार्गेट करी मिनिमम तो पिले 200 क्वेश्चन आमे एठी शिखिबा एवं फंडामेंटल राइट्स रो जहाँ भी पिले क्वेश्चन आसीबो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही 200 टा क्वेश्चन मु फंडामेंटल राइट्स रो पिले पिक करिछि। तो यार भितर ही आसीबो से जेकोसी पिले एग्जाम हो तुमे माने बीए बीड दियो बीसी बीड दियो बीसी बीड रो जो पार्ट 1 रही पिले सेथिरे मध्ये पॉलिटी रो क्वेश्चन आसुछि गोटे रु दुईटा क्वेश्चन आसुछि सेथिरे मध्ये आसी परिबो किंबा ओ ट्रिपल एसएससी हो ओ डबल एस टीटी हो ओटीटी हो मेनी मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जदि तुम्हें मैंने प्रिपेरेसन करुच ताले निहाती भाव में ये क्लास टी पिले तुम मानक इंपोर्टाट रहिबो सेशन टी को कंप्लीट देखिए। जदि पिले चैनल नुआ अच्छ निश्चित भाव में चैनल को एवं ही पिले सब्सक्राइब कर निज फ्रेंड्स मान को शेयर कर। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कौन सब बेनिफिट मिल कौन पे ये चैनल को सब्सक्राइब कर पिले ना चैनल को सब्सक्राइब करने द्वारा फास्ट ऑफ ऑल तो यार सीरीज पिले तुम्हें मैंने आगू पाइपर। सेकेंड तुम मानकर पिले डेली बेसिस रे लाइव क्लासेस ऑल टॉपिक आम कहीपर ऑल सब्जेक्ट टॉपिक को आम लाइव क्लास जरिए कवर अप करी जाऊे जोटा कि आमर गोल रही। एवं तुम्हें मैंने जदि ओडिशा गवर्नमेंट प्रिपेरेसन करुच जेकोसी पिले एंट्रांस हो लाइक एएस हो डबल एसएससी हो ये चैनल माध्यम तुम्हें मैंने क्लासेस पाइपर मैथमेटिक्स टू आरंभ कर रीजनिंग टू आरंभ कर इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सब क्लासेस पिले ता सहित जदि टीचिंग एग्जाम प्रिपेरेसन करुच बीड एंट्रांस हो सीयूटी बीड हो ओ डबल एस टी ओटीईटी हो ताले ये प्लाटफर्म बा ये चैनल तुम मानकर चैनल तुम मानक ही रही तुम मानकर कार्य निहाती भाव में परवर्ती समय लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ लिंक फिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रही लिंक रे क्लिक करके जॉइन हो पार टेलीग्राम एप्लिकेशन को जीव मास्टरब्रेनिq फिले सर्च कर तुमने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पार। तो कौन सी पिले डेरी न करी क्वेश्चन नंबर 1 को पिले कवर अप करवा यार पीडीएफ परवर्ती समय तुम मानक पिले पेड ग्रुप रे मिल जाव। इंडिया इज रेफर एज ए डैश अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची पिले भारत इंडिया इज रेफर एज ए भारत अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज एम्पावर टू एडमिट ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया एटा होची पिले पार्लियामेंट हु इज इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट इज प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची पिले राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एटा पिले मन रखिबो जदि पिले 21 ए कथा कही था यहाँ हूँ पे एजुकेशनल राइट अटे। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ए स्पेशल अथॉरिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट जदि आम कहीपर जो पे आमर मौलिक अधिकार खून है ताहले पिले आम कहार साहाय्य नहीं पारिबा ना सुप्रीम कोर्टर पिले द्वारस्थ हो पारिबा। तो आम कहीपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज पिले रही तो से कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जरिए आर्टिकल 32 जरिए आम पिले सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ हो पारिबा। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन एठी हमको पचारि पिले आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही तो ये जो फंडामेंटल राइट्स रही है कौटी रही पार्ट 3 रे रही जोटा कि फिर मोस्ट इंपोर्टाट अटे एग्जाम रे फिले क्वेश्चन पचारे काइंडली एको फिले नोट डाउन करके रखिबो एगेन फिले क्लास टी को रिविजन मध्य करदेव बेटर मन रहिबो ठीक अच्छे। अंडर आर्टिकल 368 जोटा को आम फिले कहूचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि रही है Parliament has no power to repeal fundamental rights because they are a basic structure of a constitution एवं मौलिक अधिकारटा पिला आमर संविधान मूल अटे ठीक अच्छे। फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम एग्नेस्ट द स्टेट फंडामेंटल राइट्सटा पिला आम क्या एग्नेस्ट रे क्लेम कर परिबा ना स्टेट एग्नेस्ट रे क्लेम कर परिबा। ता परवर्ती क्वेश्चन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी आम कहीपर पिले आमर जो आर्टिकल 20 रही 21 रही ये आर्टिकल 20 और 21 को आम बिल्कुल भी क्षुण्ण करें आउ अदर आर्टिकल को क्षुण्ण कर जहाँ भी आम माने फंडामेंटल राइट्स हो ड्यूटीज हो जहाँ भी मेंशन रही पिले से जरिए क्षुण्ण हो पार किंतु आर्टिकल 20 और 21 जो मेंशन रही तो ये तुम मानकर कौन प्रकार राइट्स क्षुण्ण हम ना केते ना इमरजेंसी टाइम रे पिले ठीक अच्छे मन रखिबो एग्जाम रे पिले क्वेश्चन पचारिबो। ता परवर्ती क्वेश्चन को पिले जीवा
Class 1 of Article 13 is applicable only pre-constitutional laws. Original constitution classified fundamental rights into 7 categories, but now there are ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କଥା କେତେଟା ପିଲା ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଥିଲାରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପିଲେ 7ଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କେତେଟା ଅଛି 6ଟି ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜାୟାର ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟିଜ୍ started from the struggle for independence against the British rule। ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଆମର ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପାଖାପାଖି ପିଲେ 300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ 300 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ହେଇଛି ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମର ପିଲେ ରହିଛି ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସଟା ଆମର କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି। ତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବା ୟୁଏସ୍ରୁ ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ USA ନ ଦେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏକା ଆନ୍ସର କରିଥାନ୍ତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବା ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଅ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଆମେ UK। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ, ଏଟାକୁ ପିଲେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସିଂଘଭି କମିଟି କହିଥିଲେ ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ କଥା। Under which article of the Indian Constitution citizenship of a person can be determined at the commencement of the Constitution? এটা হচ্ছে পিলে Article 5. Which article describe the person voluntarily acquiring citizenship of the foreign state not to be an Indian citizen? এটা হচ্ছে পিলে Article 9. Who is authorized to lay down qualification to acquire the citizenship? এটা হচ্ছে পিলে কে রে প্রেসিডেন্ট। Which of the following is a qualification to acquire citizenship by naturalization? এটা হচ্ছে পিলে person is in service of a government of India from 12 months। তো পরবর্তী কোশ্চেন পিলে fundamental rights are not applicable to armed forces। Which article of the Constitution empower the Parliament to enact the provision for acquisition and termination of a citizenship? এটা হচ্ছে পিলে Article 11. By which fundamental rights other fundamental rights is protected? এটা হচ্ছে পিলে right to constitutional remedies, जोटा कि पिले Article 32 रे हमर मेंशन अछि कि जदि हमर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए ताले हमें कोन करि परिबा ना सुप्रीम कोर्ट पिले द्वारस्थ हो परिबा। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट अंडर द आर्टिकल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी होची गोटे पिले लीगल राइट अटे, एटा अंडर द आर्टिकल ऑफ को आर्टिकल पिले आर्टिकल 300A, ठीक अछि मन रखियो पिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? प्रॉपर्टी जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक अछि, राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि गोटे हमर कोन नुहे आमर गोटे फंडामेंटल राइट्स नुहे, एटा को पिले उच्छेद करा जायछि। Which among the following is not a fundamental rights? Right to strike, obviously हमें right to strike एटा गोटे fundamental rights to पिले नुहे। Which fundamental rights has been a subject of a maximum controversy and allegation? एटा होछि पिले right to property। The right to private property was dropped from the list of fundamental rights by the right to property took the shape of a legal right by way of फिले कौन 44th amendment। The right to equality granted by the Indian Constitution does not include economic equality। Equality before the law implies absence of any privilege in favor of any person। Which resolution for the first time express the concept of equality before the law? এটা হচ্ছে পিলে স্বরাজ বিল, এটা কো পিলে স্বরাজ বিল পিলে। The fundamental rights of the Indian citizens were
enshrined in original constitution. Which one of the following fundamental rights was discovered by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? किए डिस्कवर करथिले फिले एवं सेटा ता ना कोन थिला? तो एटा हे जे फिले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि फिले आर्टिकल एटा होची फिले हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. The right to constitutional remedies as fundamental rights. The constitution under article 32 can be suspended by parliament. एटा कहा द्वारा सस्पेंडेड करे जे परिबो पार्लियामेंट द्वारा फिले सस्पेंडेड करा जे परिबो. एटा होची फिले मोस्ट इंपोर्टेंट अटे. परवर्ती क्वेश्चन फिले writs can be issued for enforce of fundamental rights by Supreme Court. Which one of the following fundamental rights is restrained by the Preventive Detention Act right to freedom? तो मन रख पिले परवर्ती क्वेश्चन रही who enjoy the right to impose reasonable restriction fundamental rights Indian citizens who has the power of empower the court other than the Supreme and High Courts to issue writs and other for the enforcement of the FRS. এটা হচ্ছে ফিলে parliament. Who can breach any fundamental rights without damaging or destroying the basic features of the constitution? এটা হচ্ছে ফিলে parliament. Which one of the following courts is responsible for the enforcement of FRS? এটা হচ্ছে ফিলে Supreme Court. Which of the following is the guardian of the affair of the citizens? Guardian फिले कहा कहबा Supreme Court को फिले कहबा. Any violation affair can be both the Supreme Court ଆଉ prime माने who is authorized to impose এটা হচ্ছে ফিলে কোন legislative. The FRS of the Indian citizens can be suspended by the president during emergency. तो এটা ফিলে কোড থিলে রে কেতে नंबर क्वेश्चन ফিলে আমি থিলে हां आर्टिकल 226 रे हाई कोर्ट बहुत बढ़िया केते नंबर क्वेश्चन फिले हम थिले काइंडली इन्फॉर्म कर दियो. फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक कंडीशन ऑफ अ सोशल लाइफ विदाउट व्हिच सिटीजन्स कैन नॉट बी एट इज योर बेस्ट सेल्फ. हाँ द फंडामेंटल राइट्स एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ अ सिटीजन्स एगेंस्ट आर्बिट्ररी रूल. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सिटीजन्स फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स. अल्ट्रा वायर्स मीन्स विदाउट अथॉरिटी. अल्ट्रा वायर्स माने कौन विदाउट अथॉरिटी मन रखिबो. हु आर नॉट एंटाइल्ड टू फॉर्म यूनियन एटा होची फिले पुलिस. बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1995 व्हेन ही सी विल बी लूजिंग द सिटीजनशिप एटा होची रेन्यूसिएशन डिप्रिवेशन एवं टर्मिनेशन फिले. हु क्वेटेड चाइल्ड ऑफ टुडे इज द सिटीजन्स ऑफ टुमोरो एटा फिले की कहिथिले जवाहरलाल नेहरू फिले कहिथिले. जनरली द सेंसस इज कंडक्टेड फॉर सेंसस फिले केते वर्ष पई हुए 10 वर्ष पई हुए. हु क्वेटेड फ्रीडम इज माय ब्रिटिश राइट एटा होची फिले सरदार वल्लभ भाई पटेल. व्हाट इज द एज इन इयर्स फॉर कास्टिंग देयर वोट वोट पई फिले केते वर्ष 18 वर्ष रहिते. Which article and amendment changes the right to vote from 21 to 18? এটা फिले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे. तो फिले मन रख आमर जो रही 61th अमेंडमेंट मन रख फिले बा 61st अमेंडमेंट जो फिले रही एथिरे फिले आमर आर्टिकल 3 to 6 जरिया रे एवं हाँ आर्टिकल 3 to 6 जरिया रे 61 अमेंडमेंट जरिया रे फिले यह कौन करागला ना बयसटा को 21 वर्ष जो थिला सेटा को भोट देवाई सेटा को फिले 18 वर्ष कर दिगला. इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिले सबुतिक एग्जाम रे पचारुची क्वेश्चन गुड़िक बहुत भल भाव लक्ष्य कर फिले
क्रीमी लेयर मीन्स क्रीमी लेयर अर्थ कौन पर्सन हाविंग हायर इनकम बैकवर्ड क्लासेस बीसी माने कौन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोस्ट बैकवर्ड क्लास मंडल कमिशन डील्स विथ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पूर्व मुझे तुमको फिले कही मंडल कमिशन आमर केते मसीह केते मसीह भितर आसीला 1979 मसीह फिले मंडल कमिशन आसीला केते मसीह आसीला 1979 मसीह फिले मंडल कमिशन आसीला ठीक है बैकवर्ड क्लासेस मनकर शिक्षा क्षेत्र में अग्राधिकार उन्नति पाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ मीन्स ही सेम लॉ शैल ऑब्वियसली आम कह जिते बड़े पिले आम देखु प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ मीन्स माने लॉटा आम समस्त सामान नियमटा समस्त समान सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी रिजर्व फॉर क्या थी सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास पीपुल क्या रिजर्वेशन थी आम कह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपुल मीडियम बा मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज 50% ठीक अच्छे तो 50% फिले तुम मनकर माइनॉरिटी में बी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दिस इज नॉट द ग्राउंड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ हूँ फिले पब्लिक नुइसेंस ठीक अच्छे यहाँ रेन्युएसेंस हम छाड़ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एफआईआर सिस्टम यहाँ हूँ फिले सुप्रीम कोर्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बहुत बढ़िया पिले शाबाश व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू द डीपीएसपी in which case did Supreme Court restrict the authority of a parliament to amend fundamental rights and declare these rights to be absolute, permanent and unilateral. In the famous केशवानंद भारती এটা ফিলে গোলকনাথ কেস ফিলে এটা মনে রাখতে তারপরে इन द फेमस केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस द सुप्रीम कोर्ट accept the power of the parliament amended the constitution under act 3680 under article 3680 subject to dash अच्छा 360 subject to certain implied and inherent limitation of not amending the basic structure of the constitution. The protection of a guaranteed under Article 21 is available even to convicts in jail. The convicts are not by mere reasons of their conviction deprived of the entire affairs which they otherwise processes. This is the principle of a laid down in Sunil Batra Delhi administration case. देखो which one is not a affair the right to strike टा गोटे affair फिले नुह ठीक अच्छे right to strike टा गोटे affair नुहे यहाँ फिले मन रखियो which one of the following affair has been subjected of a litigation since the inauguration of the constitution यहाँ हूँ फिले right to property. The role of equality before law is not applicable. এটা কি কইছিলে এটা হচ্ছে গভর্নর স্টেট রাইট টু ইকুয়ালিটি ইজ গ্যারান্টেড আন্ডার দ্য আর্টিকেল 14 তারপরে ফিলে দেখো আর্টিকেল 14 গ্যারান্টস ইকুয়ালিটি বিফোর দ্য ল টু অল পারসন রাইট টু ইকুয়ালিটি মিন্স রাইট টু ইকুয়ালিটি ফিলে অর্থ কোন
राइट टू इक्वालिटी होची फ्रेम्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन्स फॉर वुमेन। चिल्ड्रेन्स एंड बैकवर्ड क्लासेस हम जब देखिए फिले जो रही यहाँ राइट टू इक्वालिटी परमिट द स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। परवर्ती क्वेश्चन पिले रही इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आम कह पिले जिते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कथा देखुए जिते कौन सी गोटे सरकारी कर्मचारी नियुक्ति कथा देखुचे से पिले को आर्टिकल समस्ते समान को दिज्व सुविधा सुजोग आर्टिकल 16 व्हिच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एबोलिशेस डिस्क्रिमिनेशन एटा होचे फिर इक्वालिटी। अनटचेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ डैश इन इक्वालिटी एंड डैश अनटचेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ क्या सहित फिले ऑलरेडी फिले आंसर भी तुम्हें देख सारे आर्टिकल 70 बहुत बढ़िया। अनटचेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ डैश इन इक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी सोशल फिले अनटचेबिलिटी तापर फिले राइट टू फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। दिस इज नॉट द ग्राउंड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा होची लॉ एंड ऑर्डर। Which one of the following right is confirmed by the constitution is also available to non citizens एटा होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पिले जोटा कि आर्टिकल 32 जरिया रे रही। द सिख इन इंडिया आर परमिटेड टू कैरी किरपान्स एंड अंडर व्हिच एफआईआर आर दे परमिटेड टू डू सो। Freedom of special under the Indian Constitution is subjected responsible restriction on the ground of protection एटा होची फिले sovereignty and integrity of the country जोटा कि हमारा preamble रे रही। One of the restriction of freedom of speech and expression is contempt of a court. At present the right to property is human right. Which one of the following is affair एटा होची लॉ ऑर्डर देखले पिले ए citizens FIR are protected dash when the citizens approach the court for remedy. The FIR of a citizens can be suspended by president ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आम कहीपर जिते बड़े प्रेसिडेंट को रूल चले राष्ट्रपति शासन चले से कौन हुए ना आमर फंडामेंटल राइट क्षीर्ण हुए। तापर एटी फिले आमको देइछि ऑफ एफआईआर द कोर्ट कैन इश्यू ए रीट गोटे रीट टी को फिले से ऐड कर पारे व्हिच एफआईआर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एटा होचे राइट एगेंस्ट एक्सप्लोशन। Human being means selling or purchasing men and women एटा फिले रहिबो राइट एगेंस्ट एक्सप्लोशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग रहिबो सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 फिले राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोरारजी देसाई एटा फिले मन रखिबो मोरारजी देसाई को समय रे फिले राइट टू जो आमर फंडामेंटल राइट्सटा आमर रही सब्जेक्ट टू राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड। हाँ राइट टू प्रॉपर्टी जो फिले रही है एलिमिनेटेड करागला ये फिले मन रखिबो। लीगल इक्वालिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी एमंग द इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी एमंग अनइक्वल। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन अमेंडेड फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एटा फिले आम जानिले याको किए अमेंडेड करथांती पार्लियामेंट अमेंडेड करथांती। ये सिटीजन्स कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी वायोलेशन फंडामेंटल राइट्स
এটা হচ্ছে আর্টিকেল 32 পিলে ঠিক আছে আর্টিকেল 32 জরিয়াରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲିବର୍ଟି under the Indian constitution a citizen's dash can be deprived of a life and a liberty and only in accordance with the procedure established by the law constitution grant right a against exclusion ଯେମିତିକା ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ଓମେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଲ୍ ଏଇଟା ପିଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟାକୁ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट एग्नेस्ट एक्सक्लूशन टू चिल्ड्रेन्स वुमेन ट्राइबल डेल एटा होची आमे पिला आमे कहबा चिल्ड्रेन्स रहिबो एवं वुमेन रहिबो ठीक अछि चिल्ड्रेन्स रहिबो वुमेन रहिबो which of the provision authorize parliament to discriminate of in favor of women against men एटा होची पिला आर्टिकल 15(3) माने जो ब्रैकेट रे 3 बा पार्ट 3 आर्टिकल 15 रो आर्टिकल 15(3) बा सी confirms a special provision to women and children आर्टिकल 15(4) confer a special provision for the advancement SC and ST the provision imposed by the article 20 is applicable for criminal cases the principle no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once double GOD आमे कहि परिया फिले जदि मन कर तुमे कोनसी गोटे भूल करछ हैला मन कर तुमे जाइछ कोनसी गोटे जगह को जोटी कि फिले हेलमेट चेकिंग चली किंतु तुम अनफर्चुनेटली कौन गोटे कम वशतः बा जानी शुणी हेलमेट नहीं न ठीक अच्छे बहादुरी मारिकी तो सेठी कौन करा तुम मान गोटे ट्राफिक पुलिस फाइन काटिले हेलमेट नहीं बोलिक आउ सब डॉक्यूमेंट तुम पाखे थिला तो ता परवर्ती छकरे जदि कौन प्रकार ट्राफिक थाए से तुमको अटकई तुम पैसा नहीं पारे ना ये पिले मन रख माने आम कहीपर पिले सेम माने कार्यपाई बास जो आमर लक्ष्य पिले गोल्स या रही ठीक अच्छे तो से आम डबल फाइन दबानी माने गोटे लोक को कौन गोटे कार्य डबल पनिशमेंट दिज्व ना commission a law enacted in future cannot make it so is the principle of ex post facto law ex post facto law means कौन पिले passing criminals law with retrospective effect an arrested person should be allowed to consult his lawyer obviously आमे कहि परिबा जी अरेस्टेड करा जाइतिबो जाहकु सी कोन कर परिबो ना तार लॉयर सहित पिले जांगी कथावार्ता हे परिबो किछि बुझी मध्य पारिबो the right of the accused to inform about his ground of forest is mandatory no person who is arrested shall be determined in custody without being informed एटा पिला में कोन कहबा Article 21 was inserted under our constitution by way of 86 amendment 2002 मन रखिए पिले 86 amendment 2002 ता परवर्ती क्वेश्चन पिले earlier to 86 amendment article 21A is in the form of एटा होचे पिले भाई गुड्स की सॉरी पिले एटा होचे तुम मानकर earlier 86 amendment article 21A in the form of a DPSP पिले ठीक अच्छे DPSP पिले ठीक अच्छे सॉरी What is the object of article 21A of the constitution एटा होचे पिले प्राइमरी एजुकेशन ठीक अच्छे राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड एटा होचे 21 जो आर्टिकल 21A रे पिले मेंशन रहछि ना एटा होचे पिले 6 रु 14 वर्ष पिला मानको मौलिक बाध्यतामूलक शिक्षा जोगाई दिया जिवो ठीक अच्छे राइट टू प्राइमरी एजुकेशन guaranteed under article 21
ए এটা হচ্ছে পিলে 86 अमेंडमेंट जरिया रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स এটা হচ্ছে পিলে 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଇୟର ଏଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ राइट टू एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ right to life includes right to get education education has become the joint responsibility of the center and state এটা ফিলে আমার হইতলা কনস্টিটিউশনাল अमेंडमेंट 1976 মସିହାରେ I think 42 second amendment জরিয়ারে the constitution does not protected right of regarded to cult which among the following article guarantees the right of minorities to establish a ministry in the educational institution এটা হচ্ছে article 30 the right to establish educational institution under article 30 is applicable to linguistic minority right to decent environment in a preventive detention law when he is likely to cause to the public. The forced labor does not include service rendered under confluence of economic circumstance. This is one of the basic for classification. It is geographical. Sexual harassment of a working woman is a violation of a fundamental rights. The popular name of the 9 judge bench of the Supreme Court has in Indra Swaini versus Union of India case is a Mandal Commission case. The freedom of speech and expression does not include calling for a Buddha. Freedom of a press is included in right to freedom of speech and expression. Freedom of press is protected under the article 91A(d). Right to privacy included right to personal liberty. A citizens of India may be diverted from the right to vote on the ground. এটা হচ্ছে পিলে রহিব unsoundness of a mind, crime or corrupt or illegal practice and a non-resident. Next question fill. Freedoms guaranteed under the Article 90 are suspended during emergency on the ground of a war or external aggression. যদি war ହେଲା external aggression ହେଲା तो এই सब प्रकार हो. Right to life and liberty guaranteed under Article 21 implies right of every human being to life with dignity. Any law depriving personal liberty guaranteed under the Article 21 had to conform with Article 20 or 22. Reasonable and just. This is not a writ. It is a writ of prevention. How many types of writs are there? 5. Right can be directly filled in the writ of a Q warrant is an order from a The writ of a Q warrant is an order from a superior court whereby it can call upon a person to show under what authority he is holding the office. The writ of a mandamus is issued by a superior court to mandamus to command a person or a public authority to do something in the nature of the public duty. The nature of the public duty. The writ of a certiorari is used by a superior court to an inferior court to transfer the record of a proceeding
in a case of in a case for review. The writ provisions is issued by a superior court to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of a natural justice. Writ provisions file provisions of lower court exceeding its jurisdiction. Writ of a provision dash na writ of provision file problems lower court exceeding its jurisdiction. The writ issued by the superior court direct any constitutional statutory বা non statutory agency from not containing their proceeding is known as এটাকে ফিলে আমি কইবা provision. Writ of a certiorari is used when a dash judicial authority act in excess of a jurisdiction. The writ in the form of a order which removes a suit from an inferior court to superior court to prevent an excess of a jurisdiction is known as a certiorari. Expulsion of any sort is prohibited under the Article 23. A laborer is entitled to but to get at least minimum wages, otherwise dash article is violated. এটা হচ্ছে ফিলে 23. Child labor is prohibited under the article of 24. Conflict of interest may be potential. तो next question फिले a person is detained under the special law when there is a likelihood of committing offense against the public. When a person is detained under a special law, an advisory board must be constituted within 3 months. Paravarti question file writ of a Q warrant can be issued on the ground of unlawful occupation of a public office. Question number 179. Which one of the following writ is issued by the Supreme Court if it send an order to restrain and a person from acting in an office which he or she is not entitled? तो आमर पिले केते नंबर क्वेश्चन थिला रे काई पिले क्वेश्चन पिले को केते नंबर क्वेश्चन 177. Writ of a mandamus can be issued on the ground of non performance of a public duty. Question number 178 पिले writ of a Q warrant can be issued on the ground of unlawful occupation of a public office. Question number 179 पिले which one of the following writ issued by the Supreme Court if it sends an order to restrain a person from acting in an office to which he or she is not entitled? এটা হচ্ছে Q warrant. Writ of a habeas corpus means habeas corpus মানে কোন না produce the body before the court. Which one of the following is a bulwark of a personal freedom? এটা হচ্ছে ফলে habeas corpus. Which one of the following reads literally means you may have the body? এটা ফলে কোয়া যায় habeas corpus. You may have the body. Exam রে ফলে question পচারে. According to the constitution guarantee fundamental rights to all citizens of India. নিয়তি বেরে সমস্ত দেশর নাগরিক ফন্ডামেন্টাল রাইটস কার্যকরী হয়ে থাকে. রাইট টু প্রপর্টি ওয়াজ এক্সক্লুডেড ফ্রম ফন্ডামেন্টাল রাইটস ডিউরিং দ টেন্যুর অফ দ্য গভর্নমেন্ট হেডেড বাই মোরারজি দেশাই. দ্য রাইট টু প্রপর্টি ওয়াজ রিমুভ ফ্রম দ্য লিস্ট অফ ফন্ডামেন্টাল রাইটস এনলিস্টেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন. এটা হচ্ছে ফিলে 44th amendment জরিয়ারে হয়েছিল. দ্য 44th amendment অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া উইড্রো যেটা কি ফিলে উইড্রো ফন্ডামেন্টাল withdraw the fundamental rights is due to property. The writs for the enforcement of fundamental rights are issued by the Supreme Court. A preventive detention act restrains the right to freedom of movement. Article 19 of our constitution from the core of the chapter on fundamental rights, the number of the category of freedoms that can Indian citizens shall have is 6. What is the minimum permissible age in years of employment in an factory or mine? এটা হচ্ছে পিলে 14 মানে খনি খাদাନରେ কাম করিবার সর্বনিম্ন বয়স হচ্ছে মানে তাঠার অধিক উপরକୁ ଆମେ কাম করিয়া 14 বর্ষଠୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ଆଉ କମ কাম কলে জেল হব.
which article of the constitution of India says no child below the age, এটা ফিলে কহে যে কহে আর্টিকেল 24 মানে বিলো কাম করিবেনি। ইকুয়ালিটি অ্যান্ড আরবিটেরিয়ানসি বা arbitrariances are shown enemies. This was said in the following case of এটা হচ্ছে তামিলনাড়ু স্টেট। The Supreme Court of India has held that a sexual harassment of a working woman amount of violation of rights of gender equality and a right to life and a personal liberty. The case in which of the apex court held this was এটা হচ্ছে ফিলে Visakha and other versus the state of Rajasthan. Consider the following statement. যদি আমি দেখিবা পেলে হুইচ ওয়ান অফ দ্য নিউলি আডেড ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটা হচ্ছে পেলে এডুকেশন অফ চিলড্রেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্যান বি সসপেন্ডেড ডিউরিং দ এমর্জেন্সি যেତେବେଳେ ପିଲେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ୱାର୍କ କରିବନି। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং পেয়ার্স ইজ করেক্টলি ম্যাচ, কেଉଁ পেয়ারটা ପିଲେ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କାଇଣ୍ଡଲି ପିଲେ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ পেয়ার্সটা ପିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। तो देख पिले तो करेक्टली मैच जो आम रही देखा यहाँ कनसीडर द फॉलोइंग सर्टिफिकेट एजुकेशन ये गला पिले ए रिट इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंप्लेइंग ए क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इज इट्स मैंडेटरी ड्यू टू mandamus where are orders issued by courts to enforce obedience to law। এটা হচ্ছে পিলে তোমানকৰ কোন এটা হচ্ছে রিটস গুড়িক হল রিটস আর অর্ডর ইস্যুড বাই কোর্টস টু এনফোর্স অবিডিয়েন্স টু ল। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং পেয়ার ইজ নট করেক্টলি ম্যাচ, এটা ফিলে ফ্রিডম অফ কনসিয়েন্স ইনক্লুড দ্য রাইট টু ওরশিপ আট দ্য টেম্পল অফ অল আওয়ার অফ দ্য ডে। এগুলো ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস প্রোভাইডেড টু দ্য সিটিজেন্স আর subject to reasonable the fundamental rights it होची प्ले पॉजिटिव और नेगेटिव the fundamental rights provide the citizens are subject to reasonable restriction। तो एति पिले हो 203 पर्यंत ठीक अछि। तो परवर्ती समय पिले यार सेकेंड पार्ट को कवर अप कर दबा। हां आ पिले आ 7टा आ 4टा क्वेश्चन कवर कर दबा एटा सरी जीवो ठीक अछि। फ्रीडम फ्रॉम arbitrary arrested is provided under right to personal liberty। the number of fundamental freedoms are guaranteed by our constitution होची 6 पिले to prevent person coming to India from Bangladesh, Sri Lanka, African countries to become Indian citizens। a citizenship amendment act was passed in the year 1986। से माने बाहर देश रे हम देश रहिबे हम citizenship हमर नागरिकत्व प्रतिनिधित्व करिवे तो एटा हमर रहिछि। एटा पिले केबे पास हितला अमेंडमेंट 1986 रे पिले पास हितला ठीक अच्छे। ता परवर्ती क्लास रे पिले आमे कवर अप करबा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी रो जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो आमे पिले कवर अप कर देबा। तापर पिले डीपीएसपी को कवर अप कला परे तापर आमे जिबा फंडामेंटल ड्यूटीज को ठीक अच्छे। तो बहुत भलो भलो क्वेश्चन पिले आमे कवर अप करबा बेसिकली कांसेप्ट पेपर को नै कि जाकि तुम मानकर पिले एग्जाम रो सिलेबस रे अछि तो नियत भाବରେ एग्जाम रो सिलेबस एथु क्वेश्चन आसी पारे। तो बहुत भलो भाବରେ पिले जगी रखी प्रिपरेशन चालू रखुव ठीक अच्छे। तो चैनल नुआ थे पिले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर शेयर कर और निज फ्रेंड्स मैंने पिले रेफर करेंगे से जॉइन करेंगे। जब पेड ग्रुप रे जॉइन होवार अच्छी 9861981555 ये नंबर पिले टेलीग्राम कि व्हाट्सएप थ्रू मेसेज कर मुझे पिले डिटेल्स बुझेदेवी पेड ग्रुप ठीक अच्छे। तो थैंक यू सो मच पिले जय जगन्नाथ।